हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द सेकंड टी20 ऑफ द 3 मैच टी20 सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मैच जिस शुरू होने वाला था तो न्यूज़ आई कि ग्राउंड वेट होने, आउटफील्ड वेट होने की वजह से जो है मैच डिले से स्टार्ट होगा। सारे फैन जो थे वो वेट करने लग गए और फिर कोई 2.5-2 घंटे बाद जो है वो कोई 2.5 आवर्स बाद जो है वो मैच फिर रिज्यूम। और न्यूज़ आई कि 8 ओवर्स पर साइड ये मैच होगा और 2 ओवर्स का पावर प्ले होगा, नो ड्रिंक्स ब्रेक, और 8 ओवर साइड ये मैच होगा। तो इंडिया won the toss and elected to bowl first in a rain curtailed मैच। ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था। कैमरॉन ग्रीन गॉट रन आउट फॉर जस्ट 5 एंड मैक्सवेल गॉट आउट ऑफ द वेरी फर्स्ट बॉल ही फेस्ड। उसके बाद एरन फिंच जो थे वो अपने दूसरे एंड से अटैक कर रहे थे काफ़ी अच्छा, और ही वॉज पनिशिंग द लूज डिलीवरीज फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स एंड ही वॉज कंटिन्यूसली ticking the scoreboard along at a good rate. Tim David, who was playing his second match for Australia, could not contribute much as well and got out for just 2. In came Matthew Wade, who was the hero of the last match for Australia. He played some blistering shots once again and put the pressure right back on the Indian bowlers. Aaron Finch got out for 31 and Jasprit Bumrah bowled him out, who was making a comeback in the Indian team after his injury. तो बुमराह ने फिंच को बोल्ड किया और फिंच 31 बना के आउट हुए। इन केम स्टीव स्मिथ and Wade continued his brilliant form against India, and Wade made sure that Australia reached a very good total of 90 runs in the respective 8 overs. Steve Smith got run out for 8 and Matthew Wade remained not out for 43, and they managed that Australia got the score to 90 in their 8 overs. So 90 for 5, and India was set to chase a target of 91 to win the match. For India, Akshar Patel was brilliant once again and picked up 2, and Jasprit Bumrah, who was making his comeback after his injury, picked up 1 wicket. In reply, India got off to a good start with the skipper Rohit Sharma hitting Josh Hazelwood for 20 runs in the very first over and laying the foundation for Indians to chase the target easily. Adam Zampa pulled back things and KL Rahul was dismissed for just 10 runs, and Surya Kumar Yadav, who the Indians called 360, got out of the very first ball for Adam Zampa, and soon after Virat Kohli failed once again and could only score 11 runs. In came Hardik Pandya along with the skipper of Mumbai Indians रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो थे वो दूसरे एंड से अपनी काफ़ी अच्छी बैटिंग जारी रखे हुए थे, पनिश कर रहे थे लूज डिलीवरीज को रोहित शर्मा, और वो मेंटेन कर रहे थे अच्छा रन रेट और मेक श्योर कर रहे थे कि इंडिया वो अहेड इन द गेम। Adam Zampa finished his 2 overs for just 16 runs and picked up 3 crucial wickets of Rahul Kohli and Surya Kumar Yadav. Rohit Sharma along with Hardik built up a good partnership, and 14 runs were required of just 7 balls when Hardik Pandya got out for 9 and Pat Cummins picked up his wicket. In came Dinesh Karthik, who came in as a finisher for the Indians. रोहित शर्मा ने चौका लगा और आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे फिर इंडिया को। इस चौके से पहले एक वाइड हुई थी, उसके बाद चौका लगा, and Indians just needed 9 runs of the last over to win the match and level the series. आखिरी ओवर डेनियल सैम्स ने किया, who was brought into the side for this game, and Dinesh Karthik kept his cool under the pressure, smacked his very first ball out of the park for a huge 6, easing the nerves in the Indian camp and putting the pressure and the game aside. और अगले ही बॉल पे दिनेश कार्तिक ने चौका लगा दिया and India won the match by 6 wickets with 4 balls to go, and India have leveled the series 1-1 with the
decider game coming up on Sunday in Hyderabad. So Rohit Sharma was named as the man of the match for his brilliant knock of 46 not out under pressure captain's knock, and it is good for him and the Indian side as he is back in form and looked very good today. For Australia, Pat Cummins picked up one and Adam Zemba picked up 3 wickets, and India won the match by 6 wickets with 4 balls to go and have equalized the series with a cracker of a series decider coming up on Sunday. So let's hope it turns out to be another cracker of a match. And so that's it for this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. So see you in the next video. Goodbye.